Students, in our last lecture, we have started studying about a new type of function which was being called to be as a parametric function. So when we have started studying about the parametric function, so students, in that what we have learned, what are parametric functions? Parametric functions जो होते हैं वो क्या होते हैं मैडम? Whenever in the given function, whenever in the given function when you come across with a third variable, third variable means third variable means other variable than x and y, other variable than x and y, then such type of functions it is being called to be as a parametric function, student. And what can be the examples of that third variable, बच्चा लोग? What can be the examples of that third variable? Acha, it can be t, or it can be m, or it can be l, or it can be u. बराबर है कि नहीं? ऐसा कोई भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है मैडम? Yes, it can be either a t, or it can be either m, or but it can be either l, or it can be u. बराबर है? Such type of variables they have been called to be as parameters, and the functions which are involving such type of parameters, they are being called to be as a parametric function. Acha, but in the parametric function, we always differentiate the variables x and y with respect to a parameter. That means, suppose in the given sum, if the t is a parameter, so we differentiate x and y with respect to t. If m is a parameter, so we differentiate x and y with respect to m. If u is a parameter, so we differentiate x and y with respect to u. But अब मुझे ये बताओ कि if suppose in the given sum, if t is a parameter, so what is the formula for finding dy upon dx is? Dy upon dx is equal to dy upon dt whole upon dx upon dt. बराबर है and suppose if u is the parameter u, so dy upon dx it will be equal to dy upon du, so whole upon dx upon du. चलो, in the given sum, start with sum number 3. Sum number 3 x is equal to e raised to 3t. X is equal to e raised to 3t. X is equal to e raised to 3t, comma y is equal to y is equal to e raised to 4t plus 5. So here in this given sum, there are two variables x and y, which are being expressed in the form of third variable, which is t. You can start solving your sum as well, Eric. Since x is equal to since
x is equal to e raised to 3t. X is equal to e raised to 3t. Next step, differentiating x with respect to t. Differentiating x with respect to t. Next step, applying the operator d by dt on both the sides. Next step, therefore, derivative of x with respect to t. It is dx upon dt, which is equal to, बड़ा मुझे फटाफट बताओ, e raised to 3t, it is in the form of e raised to x, derivative of बड़ा e raised to x, आंसर इज बड़ा e raised to x. बड़ा ये फॉर्मूला था किसके लिए? t के लिए, और यही फॉर्मूला अब हम लोग t के बदले यूज करने वाले हैं किसके लिए? 3t के लिए. तो मैं तो बोल रहा हूँ बड़ा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भरना पड़ेगा बड़ा पेनल्टी. You will get the answer to be as derivative of e raised to 3t. Answer is e raised to 3t into d by dt of into d by dt into d by dt of 3t. चलो भाई, जिसमें 3 इज बड़ा कांस्टेंट, कांस्टेंट की जगह बाहर एंड रह जाएगा बड़ा डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t. बचा लो, व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t विल बी dx upon dt, which is equal to e raised to 3t into 3 is a constant, constant की जगह बाहर derivative of t with respect to t, the answer is 1. ये देख ले बड़ा, अपना आंसर आ गया, अपना आंसर रेडी है बड़ा. Therefore dx upon dt dx upon dt, which will become as 3 into 1 is 3. This will become 3 times of e raised to 3t. Number this as 1. Next, with respect to बड़ा y, भाई मुझे बताओ with respect to बड़ा y, what is y is equal to? जो टर्म दिया है बेटा y is equal to it is e raised to 4t plus 5. फटाफट सब लोग बड़ा आंसर दो. y is equal to e raised to 4t plus 5. Next step, differentiating y with respect to t. Differentiating y with respect to t. Next step, applying the operator d by dt on both the sides. Therefore, derivative of y with respect to t, answer is dy upon dt. And you can proceed with e raised to 4t plus 5. Again, but it is in the form of e raised to x. Derivative of e raised to x is e raised to x.
So derivative of e raised to 4t plus 5 is e raised to 4t plus 5 into derivative of d by dt d by dt of d by dt of a 4t plus 5 फॉर्मूला था t के लिए यूज किया पड़ा किसी और के लिए भरना पड़ा पहला पेनल्टी अच्छा इनसाइड द ब्रैकेट बेटा देयर आर टोटल हाउ मेनी टर्म्स टू टर्म्स तो अकॉर्डिंग टू द रूल पढ़ाई बेटा के लिए ऑपरेट मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तो तैयारी का अकॉर्डिंग टू साथी। द रूल बेटा ऑपरेटर तुम्हें किसको किसको देना पड़ेगा दोनों को 4 इज अ कांस्टेंट कांस्टेंट की जगह बाहर डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t आंसर इज 1 5 इज अ कांस्टेंट कांस्टेंट का डेरिवेटिव बेटा इज 0 you will get your answer to be as a therefore dy upon dt which is equal to a e raised to 40 plus 5 and now you can start with the differentiation beta 4 is a constant की जगह बाहर what is derivative of t with respect to t is 1 y is a बड़ा constant की जगह अरे constant का डेरिवेटिव बड़ा 0 4 into 1 answer is 4 so by you will get your answer to be as therefore dy upon dt answer will be equal to 4 times of e raised to 40 plus 5 and now here you can number this as 2 next from 1 and 2 now it is possible that we can find the value of dy upon dx since dy upon dx dy upon dx answer is equal to dy upon dt the whole upon dx upon dt तो अब यहां से आंसर आ जाएगा बेटा फटाफट फ्रॉम 1 एंड 2 dy upon dt का जो आंसर तुम्हें मिला था बेटा व्हाट इज dy upon dt is 4 times of e raised to 4t plus 5 4 times of e raised to 4t plus 5 upon 3 times of डेरिवेटिव ऑफ बेटा dx upon dt का आंसर क्या मिला था 3 times of e raised to 3t from
1 and 2 फ्रॉम 1 and 2। चल भाई बताओ फटाफट पढ़ो। तो अब यहाँ पे है बड़ा ऊपर देर इज अ टर्म ई रेज टू, नीचे ऑल्सो बड़ा देर इज अ टर्म बड़ा ई रेज टू, बोथ द टर्म्स बड़ा दे बिलोंग्स टू द बड़ा सेम फैमिली। तो यहाँ पे क्यों ना नीचे वाले टर्म को बड़ा ट्रांसफर कर दिया जाए ऊपर। दिस विल रिजल्ट एज 4/3 e raised to 40 plus 5 into e raised to minus of 3t by using the बड़ा laws of indices। नीचे पावर बड़ा पॉजिटिव, ऊपर आके it will become negative। फिर this will result as a raised to m into बड़ा a raised to n, which is equal to a raised to m plus n बड़ा। So you will get the answer as a 4/3 चलो बड़ा 4t minus 3t। ये देख तुम लोग पहले ऐसा लिख सकते हो बड़ा 40 plus 5 minus of 3t। ये जो टी वाला जो टर्म्स है ना बड़ा उसको एक साथ ले लो, 40 minus of 3t। फिर एक आंसर आ जाएगा उसका बड़ा। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, सॉरी नॉट आई, dy upon dx is equal to dy upon dx is equal to तो भाई व्हाट इज dy upon dx is equal to 4/3। 40 में से अगर 3t गया तो इट विल बिकम t, तो इट इज t plus 5, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बड़ा अपना आंसर ये स्टेप में ही छोड़ दिया होगा मैडम। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव लेफ्ट योर आंसर टिल हियर ओनली? बट इसके आगे बड़ा सम सॉल्व हुआ कि नहीं? चल हाँ, इन द आंसर यू राइट डाउन बेटा दैट ई आल्सो, मैं ई लिखना भूल गया बेटा, ई रेज टू टी प्लस 5। राइट डाउन द आंसर एज बेटा ई रेज टू
t plus 5. Next, come to our main question number 2. Main question number 2. Question number 2 का sum number 2. Main question number 2 का sum number 2. चल बता, what is that sum? X is equal to square root of 1 plus u square root. X is equal to X is equal to it is the root of 1 plus u square. Y is equal to it is log 1 plus u square. चलो बेटा, this time